What's up everyone? Okay, so आज हम decide करेंगे. आज हम सीखेंगे how to build websites effortlessly and make 3 to 5K per month. Although अगर आप अपनी website agency खोलना चाह रहे हैं without having any knowledge on how to create websites, if I can do it, anyone can do it. मैं website developer नहीं हूँ, लेकिन again, you utilize tools, you utilize resources, और उसकी वजह से आप अपना भी काम आसान करते हो और पैसे ज़्यादा बनाते हो. So how are we going to do this? अगर आपने अपने लिए बनानी है तो आई डू रिकमेंड गो हैड एक नहीं 5-6 वेबसाइट्स बना लें टेम्पलेट्स के जरिए ही होंगी इट्स and that's why I keep saying effortlessly because seriously it requires no effort. Okay, so this is what we're going to go. We're going to log into ESA. Again, you can sign up for ESA. The link should be somewhere in the description. If not, reach out to support and they should be able to help you. अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आई रिकमेंड गेटिंग अ डोमेन. अब अगर बहुत ही फर्स्ट टाइम आपने कभी कभी अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई, ठीक है, और आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए. पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है. पोर्टफोलियो ये है कि आपको किसी को प्रूव करना है बगैर उनको आपको हायर किए, ठीक है, उनको कुछ दिखे पहले से कि भाई आप कर सकते हैं. सो आई रिकमेंड गेटिंग अ डोमेन एंड देन creating multiple वेबसाइट्स और उसी डोमेन पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो दे दें ताकि कोई आपसे एग्जांपल मांगे कि भाई क्या आप किस किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. ये जो टेम्पलेट्स हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि चूंकि आप टेम्पलेट्स यूज करोगे और बहुत ज़्यादा बेसिक वेबसाइट्स होंगी तो यू शुड ओनली चार्ज समवेयर फ्रॉम $300 to $500, ठीक है, लेकिन that's only like 2 pages. If they require 5 pages, make it 700. क्योंकि अच्छा वैसे वेबसाइट जो है ना 5-5 हज़ार के लोग बेच रहे हैं, which I do see the value in that only when it's being built from scratch. क्योंकि आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे होंगे तो इसलिए. और अगर ये फर्स्ट टाइम आपका है, I firmly believe in building relationships, ठीक है, ताकि जो एक बंदा है वो ना सिर्फ खुद ही आपका फॉर लाइफ क्लाइंट बन जाए बल्कि अपने, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस ओनर के जो सर्कल होता है उसमें और बिजनेस ओनर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. सो यू वांट टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप ताकि वो आपको रेफरल्स भेजे. दैट्स हाउ यू आर गोना मेक अ नेम इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है. सो हाउ आर वी गोना डू दैट? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सो आप नोशीन पोर्टफोलियो लिख देते हैं, portfolio.com. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल nosheenportfolio.com 1 सेंट का है फर्स्ट ईयर, उसके बाद जो है जो भी है. सो लेट्स असूम इट्स दिस वन, ठीक है, आप खरीद लोगे ये. अब इसको आपने you're going to log into ESA. You are going to click on settings all the way at the bottom. Then you are going to click on domains in the left menu and add a domain. You're going to add it here and you're going to continue. This is going to take you, ये आपको required fields है और आपने सिर्फ ये records add करने हैं when you're logged into whoever you purchased the domain with. It's very easy. आप record में A टाइप करेंगे, host में आप add का symbol टाइप करेंगे, value में आप ये add करेंगे, फिर दूसरा C name होगा, फिर उसमें www डालेंगे और ये वाला इससे कॉपी करके उसमें करेंगे और give it like 30 seconds and then click on verify records and you should have your domain listed right here. Okay, जब ये हो जाए और कुछ नहीं करना है इस वक्त, you are going to go back and you are going to click on sites in the left menu, ठीक है. अब आपने ये funnels हैं, ये websites हैं. For example, आपने website बनानी है तो आप website कर लो, click on new website, ठीक है. आप अपना पोर्टफोलियो ही बना रहे हो ना, तो पहला आपने डेंटिस्ट का पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है. तो आप कह सकते हो डेंटिस्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम टेम्पलेट्स चूज करना है, कंटिन्यू. अब इसमें अगर आप डेंटिस्ट टाइप करेंगे तो डेंटल हेल्थ सर्विसेज, डेंटल सर्विसेज, डेंटिस्ट्री सर्विसेज जो भी है, जब आप इसको चूज कर लेंगे
Let's assume continue adding template. Dental, yeah. इसको आप click करें, draft में, nothing is made, but I wanted to show you. It's a three page website, ठीक है? अच्छा, 3 page website आप $300 चार्ज कर लो, ठीक है? लेकिन इसको आपने थोड़ा सा customize करना है. For example, click, edit, new tab में कर लेते हैं. It is so simple. You'll be shocked how much money you can make. Okay. इधर आपने ऐड करना है उनका लोगो नेविगेशन बार में, ठीक है? अबाउट अस, सर्विसेज, प्रैक्टिस. हमारे 3 पेजेस हैं, तो एक पेज आप इसमें से निकाल सकते हैं. प्रैक्टिसेस आप निकाल लें तो उसके लिए ऑन द राइट साइड प्रैक्टिस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट एंड डिलीट, ठीक है? तो ये अब 3 हो गए क्योंकि आपने 3 पेजेस बनाने हैं, ठीक है? एंड कीप सेविंग. ओके, इधर लोगो ऐड कर लें, विच इज ये है लोगो, ब्रांड लोगो. सो let's assume ये लोगो है हमारा. डबल क्लिक एंड इट गॉट एडेड, ठीक है? जाहिर है लोगो का width, oh this is too big, 100 कर देते हैं. चलो, for now that's what it is. जो भी आपने इस बार इधर ऐड करना है. अच्छा, अगेन इतना भी मैं आपको बता दूं, ये पहले आप बेशक यही रहने दें, लेकिन चैट जीपीटी जिंदाबाद. Give me a title and a description for a website. Above the fold कहते हैं उसको, जो टॉप वाला पोर्शन होता है. Using this statement. Keep the description 3 lines. Actually 4 lines long. Maybe 3. We don't want too much text on the very top of the page. ये वाला जो है. It's still a little too long, but चलें ये कर देते हैं. There is a better way to do this. वो जब ऑफर बनाते हैं तो उसमें मैं आपको I've already taught it multiple times, but I'm gonna do it again. Okay, so that's what it is. Make an appointment. So this is where you are going to this is going to go to, when you click on this is a call to action. What should happen? Link to a website URL, या pop-up खुल जाए. Usually it is the pop-up, and the pop-up is right here. ठीक हो गया? Pop-up में हमने ऐड करना है make an appointment. ठीक हो गया? अच्छा, इसको इधर ही छोड़ते हैं. We are going to click on settings again, and we are going to go to, ये सारी वेबसाइट में शायद आपको 1 घंटा लग जाए. So imagine अगर आप 1 घंटे के $300 चार्ज करने लगे, so imagine what that's going to do. So we're going to scroll all the way down to calendars. Where is it? Right here. We're going to see there are multiple calendars. So I thought कोई calendar नहीं है, इसलिए मैं आके बनाना चाह रही थी. Creating a calendar is super simple. Just create calendar. But for the sake of this, I'm going to go ahead, click on another element, and then I'm going to choose calendar. Which calendar? 20-minute call request. Okay. वो नहीं हो रही. Let's choose another one. None of these calendars are active. So keep that in mind. If a calendar, see that draft, this is going to show 404 error. But if it's active, and it's simple, very simple to change it back to active, activate calendar. ठीक है? So for example, अगर मैं इसको activate कर लूँ. Okay. So now I'm going to go ahead and choose calendar.
I think it was this one. ठीक है? Okay, and then that's it. Leave this here. Click save. Pop-up settings, medium, disable, नहीं करना, सब कुछ सही है. Okay. Keep going. Our services, जो भी services हैं उनकी इसको add कर लें. 4 services आप ChatGPT से पूछ लें. You can do the same for lawyers, car, ये जो auto detailers होते हैं या auto car dealerships होते हैं या any small business you can do this. ये सब कुछ आप इधर ऐड कर सकते हैं. इधर ठीक हो गया. Again, make an appointment should go to a pop-up again. Open pop-up. इसको भी we almost same. You need to read this and make sure that it makes sense, but everything else is done for you. ठीक है? हो गया. उनका एड्रेस ऐड कर लें, ईमेल ऐड कर लें, it'll show. लोगो ऐड कर लें, कॉल कर लें, जो भी जैसा भी है. You just need to type in whatever it needs to be done. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटा लगा दिया, ये सब कुछ आपने कस्टमाइज कर दिया, and then you're going to publish it. But actually make sure you check the mobile mode as well, क्योंकि वो usually थोड़ा different होता है. So make sure it looks the way you want it to look like. ठीक है? हो गया? And then publish. But when you publish, it's going to say select a domain, and then you're going to select that domain that you added. उसके सामने आप हाथ में लिख दें dentistry. ये आपका एक पोर्टफोलियो बन गया है. इधर सारी डमी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, डमी लोगो ऐड कर सकते हैं, ताकि लोगों को देखे कि भाई अगर आप किसी से बात कर रहे हो कि मैं आप कोई डेंटिस्ट है, तो आप उनको ये वाला लिंक भेज सकते हो कि आपकी वेबसाइट will look like this, and that's it. All you need to do is add them to the जो calendars हैं, and make sure that there is also so when you create the website for yourself, obviously फिर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैनेज भी करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट्स होंगी वो अंडर डोमेन्स इधर आएंगी. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके 10 क्लाइंट्स होंगे, 10 के 10 क्लाइंट्स के डोमेन्स इधर आपके पास होंगे और आप उनको मैनेज भी कर रहे हो फ्रॉम विद इन द सेम अकाउंट, और आप मंथली उनको 200 या $100 per month recurring charge कर रहे हो for maintenance, and you maintain it through here, and that's what it is. So simple. You're not going to believe मैंने किस किस्म की वेबसाइट्स बनाई हैं. I'm not even a website developer. I don't even offer this services. लेकिन मैंने अपने लिए सीखी हैं. I know that people are in need of someone who's done it multiple times. I need you to do things multiple times. जब तक आप multiple times नहीं करेंगे कुछ, आप कैसे उसके expert बन सकते हो? So go ahead and try at least 10 websites so you get familiar. शुरू वाली जो मेरी websites थी वो बहुत ही ugly होती थी, लेकिन अब मैं pretty sophisticated workflows बना लेती हूँ. All right? And if you have any questions, let me know. Thank you. Bye.